Anything from the previous class? Anyone remembers? Journey to the Lord. Okay. Bhakti yoga for us. What were the other things discussed? What is the title of the chapter? Dhyan yoga. Dhyan yoga. Okay. And what all things does Dhyan yoga include? Yes, we discussed the whole, like, the steps. Okay. Niyam, yam, niyam. Wait. You can not name all of them. You can name only two of them and let others also try. So you can name the first two if you want. Yam, niyam, pratyahara. Yam, what is that? Niyam, pratyahara. Yam and niyam, or you're saying niyam and pratyahar. So the first two steps, yam, niyam. Okay, yam and niyam. Okay. What are the next steps after yam and niyam? What is yam for? What is yam? What is niyam? Can you explain? Or at least give us a meaning quickly. What is yama, niyama? Okay, Charu Mataji is saying Ashtanga Yoga Asana. Okay, yes. So Dhyan Yoga is also known as Ashtanga Yoga. Very nice. Ashtanga Yoga means 8 limbs. The first 2 limbs, yam and niyam. What are yams and niyams? Yam is not do. Huh. And niyam is do. Yes, yams are do nots, right? Prohibited actions. And what is niyam means things to do, recommended actions. So yam and niyam. After yam and niyam, I think Charu Mataji has written asana. What is asana? Or what is the purpose of asana? Fix the body. Fix the body. Yes. Fix the body for what? For yoga. What is yoga? To fix the body for? Concentration. To fix the body for meditation on the Lord. Yes. So that's asana. So we have 3 now. Yam, niyam, asana. What else? What else is there? Yoga class में क्या बताते हैं आपको? अष्टांग योग में क्या क्या आता है? अष्टांग योग में क्या क्या आता है? क्या बोलते हैं इसको? Pranayam. Yes. So, yes. Okay. So, pranayam. Okay. So, Charu Mataji has written all the answers here. So, pranayam is controlling the breath, right? And then next step is pratyahar. Pratyahar is, what is pratyahar? Bal Mukunda Prabhu, what is pratyahar? Bal Mukunda Prabhu, are you there? Okay, I guess. Anyone else? Pratyahar. What is pratyahar? I'm sure Vidhi Mataji you must be knowing. Detaching ourselves from the... Yes, pratyahar is to give up outside external engagements. Yes. Then dharana. What is dharana? Pratyahar is actually to capture the roaming mind. Dharana is to fix it on the Lord. Then dhyana, right? Dhyana is to meditate on the Lord, and then samadhi, which is uninterrupted meditation. Like that. So these are 8 limbs of Ashtanga Yoga. All right. Anything else anyone remembers? इसके अलावा क्या क्या डिस्कस किया था? पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था? Ladder you told about. Yoga ladder, yes. What is there in the yoga ladder? Yoga ladder is
from karma we start, Yes. then we take jnana, and after jnana we go to the Lord. I mean, Ashtanga. yeah. So yes, so it's not just karma, it's called karma yoga. Karma yoga के पहले भी एक और चीज आती है, कर्म कांड. Karma कांड is basically interaction. Benediction for ourselves. हाँ? कर्म योग फर्स्ट स्टेप. यस, कर्म योग. उसके बाद में कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग. ज्ञान योग जहाँ पे शास्त्र पढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट इज भक्ति योग, भक्ति योग, ध्यान योग और अष्टांग योग. एंड देन फाइनली देयर इज भक्ति योग. भक्ति योग. Steps on the yoga ladder, right? And the highest step is bhakti yoga, and we can directly take that lift to bhakti yoga. Okay. Anything else? Anyone remembers? और कुछ जो last time discuss किया था? हाँ, कर्मकांड तो ठीक है. According to Patanjali, what are the yams and niyams, and what are the benefits of those? ठीक है, we won't get into that detail now. Let's start today's class. Everyone's blank. Okay, so Bhagavad Gita 5.6. The Bhagavad Gita copy is there. So Bhagavad Gita chapter 6, chapter 6, shloka number 5. Udaret atmanatmanam Udharedatmanatmanam atmanam avasadyate anatmanam vasadate आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर atmaiva hi atmano bandhur आत्मैव रिपुरात्मनः. atmaiva ripuratmanah. Can someone read the translation, please? Yes, can I read? One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. All right, purport. So the word Atma denotes body, mind, and soul. भगवद गीता में आत्मा, ये जो शब्द है, हाँ, ये जो शब्द है आत्मा, ये अलग अलग चीजों के लिए रेफर किया जाता है. कभी आत्मा शब्द जो है हमारी आत्मा के लिए रेफर किया जाता है, कभी आत्मा बॉडी के लिए रेफर किया जाता है, कभी मन के लिए, राइट? सो द वर्ड आत्मा इज रेफर्ड in Bhagavad Gita, sometimes body, sometimes mind, sometimes soul. Depends on the context in which the Lord is speaking, right? So here, depending on the different circumstances. In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. So योग में शरीर से ज्यादा मन और आत्मा का महत्व है, right? Since the mind is a central point of yoga practice, Atma refers here to mind. क्योंकि योग में राइट मन को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है या सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज है. इसीलिए यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है आत्मा का, इतने सारे आत्मा वर्ड है इसके अंदर, राइट? आत्मनात्मानम, आत्मैव, आत्मनो, राइट? सो दिस इज रेफरिंग टू द माइंड. This is referring to the mind here. The purpose of yoga system is to control the mind and draw it away from attachment to sense objects. So योग का पर्पस क्या है कि मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको पकड़ करके लाए. शांत खाली नहीं करना है, राइट? लोग शांति शांति, हाँ हाँ हाँ. तो शांति का क्या मतलब है? हाँ, calm down when? हाँ. सो मन इधर उधर क्यों भटकता है? क्योंकि हम एक दिन के अंदर कम से कम 40,000 से लेकर के 1 लाख विचार हमारे मन के थ्रू क्रॉस करते हैं. तो इतनी सारी चीजें हैं, तो इधर उधर भटकेगा ही, राइट? और शांत क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इतने सारे विचार आते हैं. हाँ, तो शांत का क्या मतलब है? शांत का ये मतलब है कि बाकी सब चीजों पे ध्यान ना दे करके जो कि जरूरी है केवल उस पे फोकस किया जाए.
तब शांत, राइट? या तो आप बोलोगे अगर मैं एक ही थॉट पे फोकस करूं लेकिन वो थॉट बहुत बुरा थॉट है तो भी अशांत रहेगा मन, है कि नहीं? तो शांत नहीं होते। हाँ, तो दिमाग में आते तो शांत नहीं होते। नहीं, माइंड कैन नेवर बी थॉटलेस। वो ऐसा योगा में बहुत सारे योगा स्टूडियोज में आपको जाएंगे, आप बोलेंगे मन पूरा एम्प्टी कर लो, राइट? मेक द माइंड ब्लैंक. नाउ द थॉट दैट आई हैव टू मेक द माइंड ब्लैंक इज अ थॉट, इट्स नॉट ब्लैंक, राइट? तो ये विचार कि मुझे मन खाली रखना है, ये भी एक विचार है, मतलब एक तो विचार है अंदर, ऐसा नहीं कि कोई भी विचार नहीं. तो माइंड कैन नेवर बी थॉटलेस. द पर्पस ऑफ माइंड इज टू जनरेट थॉट्स एवरी सेकेंड, राइट? तो माइंड इज अ थॉट जनरेटिंग मशीन. तो हम किस विचार पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं, वो निर्धारित करेगा कि हम अशांत है या शांत है. If you are focusing the mind on negative things, right, then ashant, right? If you're focusing the mind on positive things, right, on a very very positive, in fact spiritual thought, then we'll be peaceful, right? So the purpose of yoga system is to control the mind, draw it away from attachment to sense objects. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. मन को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमें मन ही हमें ये भौतिक जगत से बाहर निकाल ले. In the material existence, one is subjected to influence of mind and senses. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with false ego, which desires to lord it over the material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature. And in this way, the conditioned soul may be saved. So हमें मन को इस तरह से ट्रेनिंग देना है, जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग होता है, राइट? कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे बहुत लेट उठता है, राइट? कभी कभी नहाता भी नहीं है, राइट? अपना सामान इधर उधर बिखार के रखता है, राइट? बेड भी नहीं बनाता है, राइट? उसको क्या करते हैं माँ बाप? मिलिट्री स्कूल भेज देते हैं, राइट? मिलिट्री स्कूल में क्या होता है, वो 4 बजे नहीं उठेगा तो डंडे पड़ेंगे. और उसने अपना उठते ही सबसे पहला काम उनको सिखाया जाता है कि वो अपना बेड फोल्ड कर करके अच्छे से एकदम सेट करके रख देने का. हाँ, ट्रेनिंग, राइट? फिर इमीडिएटली जाके नहाने का, फिर एक्सरसाइज, वो सब पूरा शेड्यूल रहता है, टाइम टू टाइम सारी चीजें, और कब कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, राइट? कब सोना है, टाइम टू टाइम सब एकदम इतना पक्का हो जाता है कि वो उनका सेकंड नेचर बन जाता है. अब उनको डंडे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही करने लगते हैं. और कोई नहीं करता है तो उनको लगता है ये क्यों नहीं कर रहा है. या उनको ऐसा, उनको जान पड़ता है कि दूसरे नहीं कर रहे ये फॉलो, तो उनका लाइफ कितना बेकार है, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है. क्योंकि अभी वो इतने ऑर्गेनाइज है, वो देख सकते हैं कि कहाँ अनऑर्गेनाइजेशन है, राइट? दे कैन इजीली सी कि जो स्ट्रगल कर रहा है बंदा, जिसको टाइम नहीं मिल रहा है. क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है. वो खाली थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए, उसको सारा टाइम मिलेगा. My mom will go at kitchen 7 o'clock, and if I get up 10 minutes late, सब काम हो गया. Then I have to go and see के हो गया. Then she will be के 10 मिनट में. Yes. 7 बजे. So इसी तरह से शुरू में हमको डंडा लगता है, राइट? जब हम इवन जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो शुरू में जैसे छोटा बच्चा रहता है, वो डांट से सुधरता है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, उसी तरह से हम पहले जुड़ते भगवान से भय के कारण. अरे प्रार्थना नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या बिजली गिर जाएगी मेरे पे या पास नहीं होगा मैं एग्जाम में, या मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या जो मेरा अभी अच्छा टाइम चल रहा है वो बदल जाएगा, राइट? पैसे नहीं आएंगे. ऐसे बहुत सारे फियर्स रहते हैं. सो वी कनेक्ट टू लॉर्ड इनिशियली थ्रू फियर. अगेन एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. कोई व्यक्ति हैं जो शुरू से ही भगवान से काफी ऊंचे स्तर पे जुड़ते हैं, बट नॉर्मली देखा जाता है कि लोग फियर के लेवल पे जुड़ते हैं. फिर फियर जब कंटिन्यू होता है, थोड़ा बच्चे को जब ऐसा कंटिन्यूसली ट्रेनिंग मिलता है, तब उसको अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगता है
एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वो चालू करता है करना। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, तब देखता है कि अरे इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत फायदे हैं ये करने से, तो मेरा ही व्हेन ही सीज अदर्स कि अरे ये दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग, आई एम सो मच बेटर बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग, तब उसको वो ट्रेनिंग का वैल्यू पता चलता है। इसीलिए जो कंपेयर करेंगे तो फिर व्यक्ति जो है भगवान से प्रेम के स्तर पे जुड़ता है, खुद ही ऑटोमेटिकली ही इज इंस्पायर्ड बिकॉज ही सीज द बेनिफिट, राइट। सो इसी तरह से हमको अपने मन को ट्रेन करना है। शुरू शुरू में मन नहीं करेगा, राइट। जैसे अभी हम जप करने बैठे थे, राइट, शुरू शुरू में द माइंड विल से अरे नहीं जप नहीं करना, क्या जप करने का, राइट, जप क्यों करने का। मेरा मन है ना थोड़ा कीर्तन में लगता है, 5 मिनट कीर्तन सुन लूंगा बस राइट, पूरा दिन जप नहीं करना है। कोई कोई जो भक्ति में आने के बाद भी ऐसा एटीट्यूड रहता है, राइट, कि कीर्तन में मजा आता है बिकॉज ऑफ म्यूजिक है, बाकी जप नहीं करना है। तो इसमें इंटरेस्ट है, भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है, खाली थोड़ा एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाए बस, राइट, उसमें इंटरेस्ट है। तो लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, शुरू शुरू में अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, बिकॉज जैसे वो बच्चे को फोर्स करना पड़ता है उठो 4 बजे, वो तो डंडा लेकर के सीधे तो उसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं हमें कि रोज सुबह हमें अपने मन को चप्पल लेकर के 100 बार 100 जूतों से मारना चाहिए। 100 जूतों से क्या मारने का मतलब है कि जो भी मन बोलता है उसको उल्टा करने का, जो भी बुरा ख्याल मन में आता है उसका एकदम ऑपोजिट करने का। अगर मन बोलेगा कि अरे अभी 5 मिनट सोने दो यार, बहुत नींद आ रहा है, 5 मिनट सोने दो, अलार्म बज गया आपका 4 बजे का या 6 बजे का, जब भी कभी 5 मिनट सोने दो, तो जैसे ही ख्याल आया और अगर हमको याद है कि नहीं मेरे को तो मन का उल्टा करना है, फुल फोर्स से जितना एनर्जी शरीर में है वो कूद के बाहर उड़ जाने का एकदम ऑपोजिट। दैट इज हाउ यू ट्रेन द माइंड। इफ यू गिव इन टू द माइंड कि अरे चलो थोड़ी देर, राइट, देन द माइंड विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, इट विल टेक यू ऑन अ राइड। वो 5 मिनट का कब आधा घंटा, कब 1 घंटा, कब 2 घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, एंड ये हैबिट बन जाएगा। सो वी हैव टू ट्रेन द माइंड बाय डिसिप्लिनिंग द माइंड इन द बिगिनिंग, एंड देन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। ये मन जो है हमारे उद्धार का कारण बन सकता है या हमारे पतन का कारण बन सकता है। वी कैन डिलीवर आवरसेल्व्स और वी कैन डिग्रेड आवरसेल्व्स। तो हमको डिसाइड करना है इंटेलिजेंस के द्वारा कि हमको क्या करना है। सो मन के ऊपर जो है इंटेलिजेंस, राइट। अगर मन कुछ बोल रहा है कि नहीं करना, आज मंदिर नहीं जाते, बहुत बोर हो रहा है, या कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा भी सर्दी खांसी भी हो जाए तो ऐसा लगता है अरे नहीं मैं बीमार हूं नहीं जाना चाहिए, राइट। उसी के सामने अगर हमको कहीं ट्रैवल करना हो, राइट, कोई अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे, भले 100 बुखार भी रहेगा ना, कभी कभी हम चले जाते हैं नहीं वहां जाके देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट अगर मंदिर में आने की बात रहेगी तो अरे थोड़ा सा बुखार लग रहा है आज नहीं भी होगा तो भी अरे थोड़ा सा देखो टच करो टेम्परेचर है राइट। सो द माइंड विल गिव ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस and we have to train the mind, right? And Krishna sees that effort. भगवान क्या देखते हैं, वो आपका एफर्ट देखते हैं कि कितना how much he wants to struggle for me. भगवान ये देखते हैं कि मेरे लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तब भगवान जाके ब्लेस करते कि ठीक है भाई ये सारे संघर्ष वाला आइटम हटा दो सिंसियर आदमी है, आने दो उसको right? So when we struggle for Krishna will bless us. He will bless us with more devotion and more opportunity to serve him. हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ा सा संघर्ष भी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अरे इतना कौन मेहनत करेगा भगवान के लिए, छोड़ो, राइट। तो हम अपने स्ट्रगल में, राइट, पड़े रहते हैं भगवान ठीक है तुम लोग अपना ही ध्यान देते रहो करते रहो अपना काम कितना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कंटिन्यू, राइट। कृष्ण सेज दैट. So it's stressed in here that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience, right? So and the mind should be so trained that it will not be attracted to glitter of material nature. So
हमें भौतिक चीजें, हमें अपने मन को इस तरह से तैयार करना है कि हमें कोई भौतिक चीज का आकर्षण ज्यादा ना हो, पर हम भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाए। तो ये ट्रेनिंग हम कैसे करेंगे? विथ इंटेलिजेंस वी शुड अंडरस्टैंड, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, द मिनट वी ट्राई टू एंजॉय, जैसे हम प्लान करते हैं कि मैं इस तरह से एंजॉय करूंगा या करूंगी, राइट, दैट इज द टाइम योर मिजरी स्टार्ट्स। तो अगर मेरे को ये पता है, राइट, कि बड़े भौतिक सुख बहुत सारा दिख रहा है, राइट, किसी को लगेगा कि अरे मैं एकदम फर्स्ट क्लास एयरक्राफ्ट में जाऊंगा, राइट, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक, फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, तो आई विल बी सो हैप्पी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, आई विल बी सुपर हैप्पी, सुपर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस, राइट। वहीं पर अगर उसको प्लेन में फूड पॉइजनिंग हो गया या प्लेन में कुछ खराबी आ गई, क्या हाल होगा, राइट। सो जो बंदा ट्रेन से जाता है, जो बंदा एक्चुअली साइकिल पे, एक एग्जांपल ऐसा, जो साइकिल पे है वो देखता है अरे गाड़ी वाला क्या जबरदस्त है, इतना एसी में बैठ करके जा रहा है, मैं तो धूप में साइकिल चला रहा हूँ, राइट। जो गाड़ी वाला है वो एक बड़े से रोल्स रॉय को देख करके बोलता है अरे इसका गाड़ी तो एकदम जबरदस्त है, वो होना चाहिए। वो देख करके वो बंदा देखता है कि अरे कोई दूसरा हेलीकॉप्टर में जा रहा है राइट, और उसको पता नहीं, उसको लगता है हेलीकॉप्टर में जाना सबसे अधिक सुख है, राइट। तो ये चलता ही रहता है, हम ज्यादा से ज्यादा इच्छा करते रहते और मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, राइट। सो इसलिए वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड्स, राइट, train our minds in a way that we are not attracted by all of this, but we are attracted to Krishna, because when we connect to Krishna, हमारा जो क्या बोलते हैं, बड़े से बड़े राजा को जितना ऐसा भोजन नहीं मिलता वो भक्त लोग खा लेते हैं भगवान को जो मस्त महाभोग चढ़ता है वो भक्तों का अवेलेबल है, राइट। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद कृष्णा you will have the best, right। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही साइकिल का एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है या लूना चला रहा है, आप अपने लूना पे जा रहे हैं, लूना का मैक्सिमम स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, नॉट मोर देन दैट आई गेस, राइट। तो आप चला रहे हैं फुल स्पीड, जितना भी उसका कान मरोड़ो वो उतने ही स्पीड पे जा रहा है राइट। और बाजू से एक गाड़ी निकलता है, मे बी टाटा, maybe Ferrari, yeah, great speed kind of moves from the side, and you are like अरे ये क्या मतलब है, मतलब मैं तो एक छोटे से लूना पे हूँ और ये फरारी एकदम फटाफट निकल गया, तो दैट टाइम उसको अगर फरारी से आगे जाना है, क्या करने का, उसको क्या कर सकता है वो व्यक्ति, वो तो निकल गया आगे क्या करेगा वो, he can only dream, right। वो पहले 20 की स्पीड पे चला रहा था, फुल कान में रोड करके 40 पे गया कितना दूर है वो फरारी से right। every second he is getting, the distance is getting wider and wider and wider, right। but then he has a friend and he dials up his friend, अरे देखो यहाँ पे एक फरारी है जो मेरे को क्रॉस करके एकदम फास्ट निकल गई, मुझे उससे आगे निकलना है, dials up a friend, and that friend happens to be the king of the country। वो बोलते भेजता है, ठीक है भाई जाओ एयरलिफ्ट करो उसको और ले जाओ आगे करके, तो द हेलीकॉप्टर कम्स, एयरलिफ्ट करता है उसको, उसके लूना को पूरी तरह से बांध देते, लूना के साथ में उसको उठा लेते हैं और उसको अब ले जाते हैं तो उसको कितना एफर्ट डालना है अभी फरारी से आगे निकलने के लिए, उसका खुद का एफर्ट कितना है, 0। उसको खाली वहां पे टिके रहना है गिरना नहीं है या नीचे नहीं उतरना, खाली वहां पे टिके रहना है, and he's already taken ahead, right, of the Ferrari or whatever other cars there are, right। So similarly we may feel कि अरे हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, चीजें कम हैं, राइट, हमारे पास तो कोई मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं, बाकी लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, अरे यूरोप ट्रिप लेकर के आए, इधर जाके आए, उधर जाके आए, राइट, we feel like that। but then when you're connected to Krishna, right, that airlift will happen and you'll go beyond that, the amount of bliss or happiness that you will experience, even those people who are going for a Euro trip, they'll be more miserable। वो खाली Instagram या Facebook पे अच्छे दिखेंगे,
Varna they'll be miserable, and you'll be internally happy because you go on a yatra, you'll be so blissful. So we have to train our minds so that we are not attracted by the glitter of material nature, because material nature is filled with dualities, two sides of the same coin. There is happiness and there is distress. Saath mein chipka hua hai, right? The thing which will give me happiness now, in some time will become cause of distress. No, 6.5. Yeah. So one should not degrade oneself by attraction to sense objects. The more one is attracted to sense objects, the more one becomes entangled in the material existence. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. Simple बात है, we are all looking for happiness. अभी हमको पता है कि एक बहुत अच्छा बढ़िया सा केक बना है आपके लिए, हमने एक बहुत अच्छा केक ऑर्डर किया है, राइट? केक अच्छा लगता है सबको, राइट? फ्रेश, cream. You like chocolate? What cake do you like? Chocolate. So very nice, Belgian chocolate cake, freshly baked, right? So वो केक मंगा है, लेकिन कोई आपको बता दे कि अरे ये केक में ना थोड़ा सा रैट पॉइजन गिर गया बनाते बनाते, खाएंगे आप? Yes, anyone will eat? It's a very nice cake, very meticulously made, huh? Yes, someone was saying something. Will you eat that cake? भूखी नहीं है, भूखे मर जाएगा. So the material happiness is like that, right? It is a very beautiful, freshly baked, by the best chef, right? Nice chocolate cake, but थोड़ा सा rat poison गिर गया अंदर बस, right? तो आपको पता है उसको खाएंगे तो ऊपर जाएंगे. Right? और दूसरी तरफ थोड़ा आपको बहुत भूख लगी है, कुछ और ऑप्शन नहीं है, फिर कोई आता है एक सिंपल सा दाल चावल लेके आता है, तो खाएंगे आप immediately, right? Because you're hungry. So therefore spiritual happiness may seem very simple, but actually will give you ultimate satisfaction. Material happiness will look very lucrative, but it has poison inside. So when you know this through intelligence, using our intelligence, we should control the mind and not fall victim. कि भाई थोड़ा सा चख के देख लेता हूं मैं, वो चॉकलेट केक चख के देख लेता हूं, ट्राई तो करने में क्या है, थोड़ा सा चलेगा, right? You will die. So one should not degrade oneself by attraction to sense objects. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in the material existence. The best way to disentangle oneself is always engage the mind in Krishna consciousness. The word he is used for emphasizing the point that one must do this. It is also said, mana eva manushyanam karanam bandha mokshayo bandhaya vishaya sango muktyai nirvishayam manaha. For man, mind is the cause of bondage and the mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage. Mind detached from sense objects is the cause of liberation. Right? Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. So, yahi man, the same mind which can degrade you, it can also elevate you. ये आपको भगवत धाम तक ले जा सकता है. क्या करना है? सिंपली जो मन है उसको भगवान के चरणों में लगाना है. तो नवदा भक्ति में बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, राइट? आदव श्रद्धा फर्स्ट स्टेज है, राइट? साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम. ये 9 स्टेजेस है अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. सबसे पहले होता है आदव श्रद्धा. थोड़ा श्रद्धा रहेगा तो हम सोचेंगे कि चलो मंदिर जाते हैं या साधुओं से संग करते हैं. तो उसके बाद आता है साधु संग, साधुओं का संग मिलता है. फिर भजन क्रिया, तो हम भागवत के बारे में सुनते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, भजन क्रिया शुरू होता है.
और उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, हृदय में जितने भी अनर्थ है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज जो है, इसमें मन बहुत रिबेलियस हो जाता है। राइट, कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं ऐसे नहीं करना है ये सब, राइट, तुम अपना देख लो, मुझे तो नहीं करना है। सो इवन इफ यू सिटिंग इनसाइड अ क्लास, द माइंड विल बी समवेयर एल्स। राइट, और हमने क्या देखा, प्रत्याहार का क्या मतलब है, मन को पकड़ के वापस लाना क्लास के अंदर, कि भाई सुनो, भागवत के बारे में सुनो, या भगवान के नाम के बारे में सुनो। तो मन जहां भी भटकता है वापस ले आकर के सुनना, ध्यान से सुनना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। सो ये जो स्टेज है, द माइंड, इसके पहले वाले स्टेजेस में द माइंड इज आवर एनिमी। मन जो है इस समय हमारा शत्रु है, क्योंकि हमको जो आगे बढ़ाएगा, मन उसको विपरीत कार्य कर रहा है। इट्स एक्टिंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू और व्हाट वी शुड डू। तो हमें क्या चाहिए, हमें भगवान का नाम जप में रुचि चाहिए, लेकिन जब हम नाम जप के लिए बैठते हैं मन इधर उधर भटकता है। राइट, मन को इंस्टेंट कुछ प्लेजर चाहिए। राइट, सो बट यही मन जब निष्ठा के स्टेज पे आता है, राइट, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति जब हो जाता है, हृदय का मैल जब निकल जाता है, तब निष्ठा, राइट, फर्म फेथ इज एस्टैब्लिश्ड। निष्ठा, रुचि के स्टेज पे जब पहुंचता है, निष्ठा और रुचि, राइट, तो रुचि में क्या होता है, नाउ द माइंड इज इंटरेस्टेड टू सर्व कृष्ण। मन जो है आपका बंधु बन जाता है। अभी मन ही बोलेगा चलो, अरे क्या कर रहे हैं अभी बैठे बैठे, ये 5 मिनट मिले, यू नो, जस्ट गो एंड विजिट द टेम्पल नियर बाय। राइट, देयर इज अ डिवोटी, वो पूरा टाइम अपने साथ में बुक्स लेके चलते थे। बस स्टॉप पे 2 मिनट भी खड़े रहने मिलेगा ना, ओपन करके ही स्टार्ट रीडिंग। वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते, एक क्षण में नहीं। राइट, so that's one of the signs of a pure devotee, avyartha kalatvam, right, doesn't waste time, एक एक क्षण जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। राइट, तो वो ऐसा लगता है बहुत हाई स्टेज है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मन को ट्रेन करेंगे, तब पहुंच पाएंगे। राइट, जैसे थोड़ा डंडा मारना पड़ेगा शुरू में। राइट, मिलिट्री स्कूल, लेकिन थोड़ा ट्रेन करेंगे तो वहां पे पहुंच पाएंगे। ऐसा लगे अरे वहां तो पहुंच ही नहीं सकते, चुपचाप बैठ जाओ, तो कुछ नहीं होगा। यू विल बी वेयर यू आर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। रोजी, यू वांट टू ऐड समथिंग? पार्थ प्रिया प्रभु। No, Prabhuji. Okay, the next shloka. हाँ, हमको जब एबीसी सिखाते तो हम कितनी बार लिखते ए और ए फॉर एप्पल, राइट, सो yeah, we have to practice, तब जाकर के we learn the language, so this needs practice. Okay, 6.6 बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैयात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। Someone can read the translation, please. Sorry, yeah, translation. Yeah, please. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest. जिसने मन को जीत लिया, राइट, मन उसका मित्र। जिसने मन से हार गया जो, राइट, या उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो उसका शत्रु। राइट, सो mind is, I'm just remembering, I don't know if it's the right example. So रावण वो जब बाली से लड़ने गया था, राइट, सो वाली बहुत शक्तिशाली था, और वाली तभी अपना गायत्री कर रहा था। तो रावण पीछे से आ रहा था, वाली ने देख लिया उसको पीछे से आते हुए,
तो वाली ने क्या किया, उसको बगल में ऐसा दबा दिया बगल में दबा दिया और कूदने लगा. सो वाली यूज्ड टू जंप फ्रॉम रामेश्वर टू पुरी टू द्वारका टू बद्री, लाइक दैट ही वुड जंप. एक जगह से कूद करके दूसरी जगह पहुंच जाते थे. वो अपना त्रिसंध्या 3 अलग अलग जगहों पे करते थे. द्वारका में था कहीं वेस्ट साइड पे एक जगह, फिर पुरी में और फिर रामेश्वर में. तो त्रिसंध्या 3 अलग जगहों पे त्रिसंध्या अपना संध्या वंदन करते थे. तो रावण जब दिख गया उसको बगल में दबा दिया, फिर अगली जगह कूद गए और यहाँ पर वो ऐसा दबा हुआ पूरा ऐसा अटका हुआ और वो उड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, कुछ नहीं कर पा रहा है. आया था उसको मारने के लिए, उसे लड़ने के लिए, बट पूरी तरह से हेल्पलेस, कंप्लीटली हेल्पलेस. और ये तीनों जगह पे जब कूद करके जब उसको छोड़ दिया तो उसको समझ में आया कि इससे लड़ नहीं सकते तो बोला अरे मैं तो मित्रता करने आया था मैं तो फ्रेंडशिप के लिए आया था, तुमने गलत समझ लिया राइट. सो हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है राइट. अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो रावण तो मार देगा, राइट. बट इफ वी शो आवर माइट ऑफ इंटेलिजेंस, राइट, उसको ऐसा उसको कंट्रोल कर लिया हमने अगर, then the mind will become friend, then the mind will be tamed, right, and then it will become the friend. So when it's not a friend, it's Ravan. So, and the purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless mind is controlled, the practice of yoga is simply waste of time. So बहुत सारे लोग हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं. कोई पानी पे चल लेगा, कोई हवा में उड़ लेगा, राइट. हम लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे. सो एक जोक है, मैंने शायद बताया पहले. सो एक लड़का था, वो एक गांव से गया और कुछ योगी लोग मिल गए उसको, तो उनके साथ चला गया हिमालय. और वहां पर उसने करीबन 12-15 साल योग सीखा. और जब वो वापस आया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अरे तुम हिमालय से आए हो, क्या सीखा बताओ. बोला ठीक है, आज शाम को सब इकट्ठा हो जाना, ये जो लेक है उसके बाजू में सब इकट्ठा हो जाना, लेकिन सॉरी जो नदी है उसके बाजू में सब इकट्ठा हो जाना, मैं बताऊंगी मैंने क्या सीखा है. तो सब जमा हो गए और शाम को पूरा गांव एक साथ आ गया. और वो व्यक्ति क्या किया, पानी पर चल करके एक ओर से दूसरी ओर गया. सब हैरान, अरे पानी पे चल रहा है, ताली बजाने लगे, वाह. तो एक बूढ़ा व्यक्ति था वहां पे, बोला तुमने अपने 15 साल बर्बाद कर दिए, ये ऐसा 2 पैसे का सिद्धि लेके आए तुम यहाँ पे, मैं 2 पैसा बोट वाले को दूंगा, मेरे को उधर छोड़ देगा राइट. सो you wasted your 15 years, your this wonderful feat is 2 पैसा worth, right. So like that बहुत सारे योगी लोग हैं जो इन चक्रों में फंस जाते हैं कि अरे मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए. जब तक मन पे नियंत्रण नहीं है तब तक it's a simply for show, right. It's a waste of time. So one who cannot control the mind lives always with the greatest enemy. तो आपको कोई दूसरा शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है, शत्रु आपके साथ अंदर बैठा है, मन, राइट. आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी. और आप सोचिए, जब शत्रु बाजू में बैठा हो खूंखार शत्रु बाजू में बैठा हो क्या स्थिति होगा आपका, राइट. एंड हाउ शुड यू बिहेव. आपको मालूम है कि बाजू में एक व्यक्ति बैठा है जो आपका पक्का शत्रु है, कभी भी आपको मार सकता है. तो आपको क्या तैयारी के साथ बैठना है क्या करोगे आप. कोई आपके बगल में बैठा है तलवार लेके और आपने जैसे इधर उधर देखा सीधा चला देगा क्या करोगे आप. क्या तैयारी के साथ बैठना चाहिए आपको.
वहाँ से चले जाए। नहीं जा सकते, you strapped on the chair. Or wherever you go, that guy will come. तो प्रार्थना करेंगे और क्या? So you have to be well equipped to fight, right? Or you have to make yourself so strong कि वो जो शत्रु है वो सामने आपसे डरे, right? तलवार छोड़ के बोलते नहीं, आई एम योर फ्रेंड, जैसे रावण का था ना, आई एम योर फ्रेंड, वैसा स्थिति लाना है हमको, राइट? So we have to therefore train the mind in such a way, or we have to actually strengthen our intelligence. हमारा कवच क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान. तो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें इतना प्रबल करना है, इतना स्ट्रेंथन करना है, that the mind is like a small mouse in front of it, right? So हमारे और भी बहुत सारे शत्रु हैं, जैसे मच्छर हमारा शत्रु है एकदम, वो भी काटता है लेकिन हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा मच्छर जैसा हो जाएगा, right? छोटा. If you make your spiritual intelligence really strong, and ultimately, if you further advance, the mind will become your friend. तब वो आपका साथ देगा, हाँ हाँ मैं भी आपके साथ में, क्या काम करना है बताओ, तो वो भी आपके साथ में हो जाएगा, right? But till the time the mind is not our friend, it's our enemy, हमको बहुत ध्यान पूर्वक चलना है, right? The constitutional position of the living entity is to carry out the orders of the superiors. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictation of lust, anger, avarice, illusion. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. So, हृदय में एक और व्यक्ति है परमात्मा, right? Who is supremely powerful, जिसके सामने मन का कोई औकात नहीं है, right? तो अगर हम वो भगवान की शरण लेते हैं, right? तो we can easily conquer the mind. And इसका प्रूफ क्या रहेगा? हम भगवान का कहना मानना शुरू करें, तब जो मन का जो आधिपत्य है हमारे ऊपर, the mind is right now in a very very commanding position. वो तलवार लेकर के आपसे सारे काम करा रहा है, बोला चल ये कर, वो कर, ये कर, and हम जो है वो चुपचाप कर रहे हैं. But when we, like a slave, but when we surrender to Krishna, who is also sitting in the heart, right? And we take his shelter and we start following his instructions, then we are freed from the slavery of the mind, right? So we voluntarily, when we should agree to serve Krishna, then we don't have to serve our lust, serve our anger, serve our illusion. तो हमको इन सब का दास बन के नहीं रहना पड़ेगा. We won't be Godas, we'll become Goswami, right? We'll be controller of our own senses. The real yoga practice entails meeting Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes Krishna consciousness directly, perfect surrender to dictation of the Lord follows automatically. तो जिस समय हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं, यहाँ ये निश्चय लेते हैं कि हाँ हमें भगवान का सेवा करना है, भगवान का नाम जप करना है, उस समय से Krishna becomes in charge. And the more and more we follow dictation of the Supreme Lord, the more and more he is willing to take charge, right? And we are free. हमें और ज्यादा आजादी मिलती जाती है मन से, right? हम मन के गुलाम नहीं रहते, हम मास्टर बन जाते हैं. फिर हमें जो करना है हम कर सकते हैं. Okay, any points, Prabhuji, you want to add? Parthapriya Prabhu. Hare Krishna. Okay, should we go to the next one? Any questions or thoughts on this? Hare Krishna. Yes. Yes, Mataji, please. After you. आपने ऐसे अभी बोला कि like when you surrender completely, you started promising Krishna that I will chant properly and I will do your bhakti, everything. But suddenly वो time पे तो mind wandering बंद नहीं होता है ना, तो हाँ, it's a process, it's a practice. The minute you start, you internally
मेक अ रिजॉल्व कि नहीं मुझे ये प्रैक्टिस करना है। ऊपर नीचे होता है। भक्ति इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, आवर ग्राफ गोज अप एंड डाउन। कभी एकदम बहुत अच्छा पीक पीरियड वेयर यू आर फुल्ली एंथुसियास्टिक टू फॉलो एवरीथिंग, एंड समटाइम्स द माइंड इज कंप्लीटली डिसएग्रीइंग एंड ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं करना है राइट या आज तो नहीं करना है कम से कम, राइट। सो देयर इज अ लो पीरियड, बट ये ऊपर नीचे होता रहेगा एंड टिल द टाइम वी अचीव निष्ठा। निष्ठा के बाद हमारा ग्राफ स्टेडीली विल गो अप। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तब मन साथ में जुड़ जाएगा काम करने के लिए। बट उसके पहले तक जब तक मन शत्रु है तब तक ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। बट प्रभु जी, अराउंड कितना टाइम लगता है लाइक टू मेक अ माइंड स्टेबल, आई मीन फॉर निष्ठा एंड एवरीथिंग? दैट इज अप टू यू। अगर आपने निश्चय कर लिया, ध्रुव महाराज ने निश्चय किया था कि मुझे भगवान को देखना है, फ्लैट 6 months the Lord was standing in front of him. 6 months, flat 6 months. No, for our general people. अगर आप भगवत गीता के 2nd चैप्टर में लास्ट में बोलते हैं, अगर आखिरी क्षणों में भी, मृत्यु के आखिरी क्षणों में भी अगर हम डिसाइड कर लें और हम बोले भगवान को, हे भगवान आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं, पूर्ण श्रद्धा से अगर हम ये भगवान को बोले, even at that last minute you can become fully Krishna conscious. But हमको हजारों लाइफ भी लग सकते हैं. Only in the stage of anartha nivritti we can spend millions and millions of lifetimes. So, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, राइट, अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है, हम करोड़ों जन्म लेकर के भी उसको क्रॉस शायद नहीं कर पाए, अगर हमारा रिजॉल्व अच्छा नहीं है तो. अगर हम लूजली बोले हाँ ठीक है चलता है, सब चलता है तो हम वहीं पर अटके रह जाएंगे, राइट. बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाहे कृष्णा पदे प्रेम धन, राइट. सो इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ्स ऑफ चैंटिंग और हियरिंग, श्रवण कीर्तन करने के बाद भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा. क्यों? बिकॉज वी आर कमिटिंग ऑफेंसेस, वी आर नॉट सीरियस. अगर हम सीरियस रह करके काम करेंगे. मैं सेम क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, राइट. व्हेन कैन समबडी बिकम अ डॉक्टर? कितना टाइम लगेगा? Someone wants to become a doctor, they can study for 3 years, 4 years after their 12th, of course, or 10 years maybe at best, right, and become a doctor. कोई लोग होते हैं जो 40 साल की उम्र में डॉक्टर बनते हैं, कोई 50 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में, अलग अलग. Depends on how seriously they take up the study. Yeah, that's true. Thank you. Okay. Yes, Yagya Mataji, you had a question? Yes, Prabhuji. I just got a line in the purport itself. I had a question that Paramatma is situated in heart of everyone. So yeah, like Tesham Satatam Yuktanam. So as we enter bhakti, we think that he's guiding us. But only when mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of personality of Godhead. So it's my question was yeah, it's not like a a fixed thing कि इसके पहले तो माइंड पूरा ऑपोजिट ही जाएगा 100% एंड उसके बाद ही 100% पॉजिटिव जाएगा, ऐसा नहीं है. सो इवन इन द बिगिनिंग स्टेजेस sometimes the mind may be very favorable, sometimes the mind may be totally unfavorable. Like I said, the graph will go up and down, but with intelligence we should decide that even if my mind is not favorable today, मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे करना है, राइट. जैसे बीमार व्यक्ति होता है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, बट उसे पता है कि मुझे खाना पड़ेगा, तब जाकर के आई विल डेवलप द इम्यूनिटी टू कम आउट ऑफ द डिजीज. सो इवन इफ इट्स ऑलमोस्ट फोर्स्ड थ्रू हिज माउथ, he still accepts that as medicine, correct? So that's the same way when we are going through our low phases where the mind is not agreeing, still we need to know through intelligence that yes, this is necessary and we have to do it.
So, Prabhuji, my question here it is that it's saying that real yoga practice entails meeting Paramatma within heart and then following his dictation. So, पहले हमारा काम है कि मन को नियंत्रण कर we realize Paramatma in the heart and then we hear our heart where Paramatma is located. Here, yeah. Right? Here, what happens is the real yoga entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. You can also take it in a sense that, before we meet the Paramatma in the heart face to face and start taking his dictation directly, we need the dictation of Guru Sadhu. Yes. Right? Because we are not seeing Paramatma face to face, we cannot directly take his dictation right away. Right? Of course, there is inspiration from Paramatma in the heart and we follow that as well. Understanding from Shastra that yes, Paramatma is there in the heart and he can inspire too. Right? So in one sense, you can take the dictation of Guru, Sadhu and Shastra and not claim that, oh, मेरे तो भगवान अंदर ही बैठे मुझे अंदर से बहुत सारा प्रेरणा दे रहे तो मैं तो गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी. Right? So that doesn't work. Right? So till the time you've not seen Paramatma face to face, definitely you need to have Guru, Sadhu and Shastra. And even after you see Paramatma face to face, still you need Guru, Sadhu and Shastra. Yes, thank you, Prabhu. Right. Okay, last sloka for the day. Or actually, let's do the next three quickly. They're all kind of cohesive shlokas joined. Jitatmana prashantasya Jitatmanah prashansasya Paramatma samahitaha Paramatma samahitaha Shitoshna sukha dukkheshu Krishna sukha dukkeshu Tatha manapamanayo. Tatha manapamanayo. Want to read the translation? Oh, Asha. You want to read the translation? Okay, someone please read the translation. Can I read? Yes, go on. Translation: for one who has conquered the mind, the super soul as is already rich. Okay, go on. Is already rich. He has attained tranquillity. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Yes. So somebody who has conquered the mind, the super soul is already reached. Like Dhruv Maharaj, जब वो तपस्या कर रहे थे, he initially he was not eating, he was eating only roots and fruits. फिर उसके next month he was eating only the leaves that would fall. Then he would only eat the dry leaves. Then he would only drink water. Then he had given up water also, and ultimately he gave up breathing also. Then the Lord appeared in front of him after 6 months. So at every stage he was actually he showed great control over the mind, because for someone to give up these things is not very easy, right? To give up eating practically is extremely difficult. You have to have complete control over the mind, right? So somebody who's conquered the mind, the super soul is already reached. So Dhruv Maharaj was already seeing the Paramatma within his heart and chanting Om Namo Bhagavate Vasudeva. He's actually seeing Paramatma in the mind. On the screen of the mind, he was looking at Paramatma. And then the same Paramatma manifested from within his heart in front of his eyes after 6 months, right? So to such a man, happiness, distress, heat and cold, honor, dishonor are all the same things, right? Because when you're experiencing the Lord, all of these externals, you don't feel them so much like that. So let's read what Prabhupada is describing. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by external illusory energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. Because mind control कैसे होगा, right? Mind control, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं mind control हो गया तो you've reached the destination. Mind control is a dual process, not just abstaining from something.
It is actually repurposing the mind and engaging it, on the Lord. The mind needs engagement. It cannot stay without engagement for a minute or a second. So controlling the mind means I've engaged the mind on the Lord and not on other things. That's the only way the mind can be controlled. So one who has controlled the mind through one of the yoga systems has already reached the destination. One has to abide by the superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme, right? The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of Paramatma or Supersoul. Because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the devotee of the Lord is unaffected by dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. This state is practically samadhi or absorption in Supreme. So, if you are, right, this is one of the formulas. If you are distressed, if you are, troubled by heat and cold, pain and pleasure, जब भी ऐसा situation है where you're troubled, right? We should understand कि सारी चीजें कहाँ हो रही है. In your existence, in your personality, where is this happening? So the worst possible situation may come to you. You may be in tremendous stress. You should understand where is all this happening. Sure. The same example, I think I've given hundreds of times, right? अपना घर जल रहा है तो एकदम पागल हो जाएंगे. बाजू वाले के जल रहा है तो ठीक है, कोई problem नहीं. Right? So we understand it's all in the mind because of the attachments, right? We are extremely distressed and pained, etc. So if you want to be happy, you have to control the mind. Simple. Right? And for someone who has attached himself to the Lord, he is oblivious to this completely. Right? He is completely safe because he is unaffected now from happiness and distress, pain and pleasure, heat and cold, etc. Like that. Yes. What to do that time? That time you won't have any time to do anything else because you'll be absorbed in service of the Lord. That is absorption. That's what the last line says. Mind control, like I just said few statements back, it means repurposing or re-engaging the mind at the lotus feet of the Lord. If you're thoroughly engaged, absorbed in samadhi, that is when you won't be affected by anything going around. So what do you do at that time? No, you're absorbed already, right? In serving the Lord, right? The mind is a thought generating machine and you're constantly absorbed. How do I serve the Lord better? What else do I do? Right? And it'll be filled with so many ideas to serve the Lord. All right, 6.8. Jnana Vijnana Triptatma Jnana Vijnana Triptatma Svastha Vijitendriyaha Utasto Vijitendriyaha Taiti Uchyate Yogi Taiti Uchyate Yogi Samalostrasma Kanchanaha. Samalostrasma Kanchanaha. Translation. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as same. So somebody who is self-realized, right? And how is he self-realized? He is self-satisfied or fully satisfied by the virtue of not just knowledge, कि हाँ सुन लिया मैंने हो गया. Realization, which means that he hears, what he hears he puts to practice, and जब practice में डाला तब realization आएगा. Right? So our classes are not just for hearing, right? Yes, you should hear, but hear, then think, meditate, how do I apply this? Ask questions, how do I apply this? And then go ahead and apply. Once you apply, then you will have realization.
कि अरे हाँ ये काम किया, अरे नहीं ये काम नहीं किया, या इसमें काम किया लेकिन ये थोड़ा सा अड़चन है इसमें, राइट? अरे काम किया और ये एक्सपीरियंस आया, राइट? ये रियलाइजेशन आया, राइट? देयर विल बी अ रियलाइजेशन, यस Krishna is there, he is reciprocating. There will be a realization, yes, Krishna is extremely merciful. Even if I do little, he acknowledges. There might be a realization, yes, Krishna is so particular about things. There may be a realization that, yes, Krishna is extremely cautious when it comes to his devotee. Krishna cannot tolerate anything wrong to his devotees. There will be so many realizations, different realizations. All of this will happen when you actually practice. वरना नहीं होगा, right? So by dint of acquiring knowledge and by virtue of the realization, one can be established in self-realization, or is called a real yogi, right? And such a person is situated in transcendence, is self-controlled, he sees everything. At that stage, there won't be any difference between pebbles, stones, or gold, right? Prabhupada, he sometimes was living in, the most famous hotels across the world, in Oberoi Hotel also, in Akash Ganga building in Bombay as well. He even when he landed in Paris, he was actually welcomed in, the mayor's house, or and in Mayapur, he requested devotees to build him a small grass hut. That's it. So he did not care whether it's a palatial building or it's a hut or it's a house, right? He could live anywhere. For him, all of that was the same, right? So pebbles, stones, and gold, they're all same for a self-realized person. Book knowledge without realization of the supreme truth is useless, right? Prabhupada writes in purport. So this is stated as follows: Atah Shri Krishna Namadi na bhavet grayam indriyai sevan mukhe hi jivada swayam eva sprutyada. No one can understand the truth, the transcendental nature of the name, form, quality, pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, qualities, and pastimes of the Lord revealed. So only when we serve the Lord, we realize different things: his name, form, pastimes, qualities, right? Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna conscious simply by mundane scholarship. Right? You cannot be a scholar and claim to know Bhagavad Gita, because unless and until you practice Bhagavad Gita. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. A Krishna conscious person has realized knowledge by grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect. By transcendental knowledge, one can remain steady in his conviction. By mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self-controlled, because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stones. Right? So it's not that, oh, I know all the 700 shlokas, I am such a scholar, so I know Bhagavad Gita in and out. No. You may be knowing Bhagavad Gita back to front, but in terms of memorizing the shlokas, but that doesn't mean that you are, authority on Bhagavad Gita. It's just like saying that, oh, I have done, I have done studies of doctorate 3 times or 4 times, right? But I have zero practical experience of actually doing an eye surgery. I am an eye specialist because I've studied, how to do an eye surgery, etc. I've gone through the books 4 times, 5 times, right? I know every single line in the textbook, but I've not performed even a single operation. I've not assisted any other doctor at all. Will you go to such an eye surgeon and get your eye fixed? Right? No, right? So practical application is the key. All right, very quickly, I think the last one for today. Surin mitrari udasina. Surin mitrari udasina. Madhyastha dvesha bandhusu. Madhyastha dvesha bandhusu. Sadhusvapi cha papeshu. Sadhusvapi cha papeshu.
Samabuddhir vishishyate. Samabuddhir vishishyate. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, and the neutral meditators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. Right. So here, at a very, very high stage of advancement, a person, he will regard all different kinds of people on an equal level. He'll see them as part and parcel of the Supreme Lord, and he'll see Paramatma within everyone's heart. That's how he sees everyone equally. Okay, so we'll stop here, and we'll continue the next time. Any questions or any comments, thoughts, or reflections? I have to complete realization, like, how you explain, withdraw your mind and apply it there. Up tak sunte the, but when you said it and looking at Srila Prabhupada's picture, like Srila Prabhupada went through so much. He had a choice, but still he went all out and he found that God gave up and he moved on. Yeah, when Prabhupada was in Delhi and coming to Bombay, he had no arrangement where he will stay. Right, we were just mentioning Prabhupada was living in palatial buildings also, huge temples as well, in a hut also. There was a time when Prabhupada was traveling from Delhi to Bombay and there was absolutely no arrangement where he will come in Bombay and stay. There's no arrangement, right? There's not even enough money for him to purchase a ticket and come to Bombay. He just boarded the train, right? Then Krishna arranged. He had some place at least here to stay, and then he, met different people. He collected some donations like that. But look at the surrender, right? And he was completely happy. He was blissful. He had no money to eat food. When he was getting the Back to God magazine printed, he had practically no money to eat food. The guy who was printing, he would sometimes get some breakfast for Srila Prabhupada, and that would be the only meal he would have in the day. And he was still collecting and putting every single penny to print Back to God magazine. And he was blissful. Okay, so we'll stop here. Do you want to add something? All right, thank you, everyone. Oh, sorry, Vidhi, you have a question. Sorry, I just saw your hand. Yes, Mataji. Okay, Prabhuji. I want to ask you, can you re-explain what is a conditioned soul? Conditioned soul is one who is conditioned by the material nature, which means entrapped by the three modes of material nature. So that's a conditioned soul. We are conditioned by so many things: our external environment, our association, the kind of food we eat, etc., etc. So primarily, we are conditioned by the three modes of material nature. We're influenced by effect of the three modes. So that's our conditioning. And conditioning also means that we have a certain type of nature, our upbringing, etc. So we may react or respond to things in a certain way. So because of the material body itself, we are conditioned. We are in a very controlled or conditioned environment. We can do only so much, or even trying to express our love for the Lord, it's limited. Soul by nature is Krishna conscious. Right now we are conditioned by the mind with so many impressions. Therefore, we are running after different things. I hope I don't confuse you more with this. No, I'm not confused. I was just thinking, can we use this term for soul that is Krishna conscious, conditioned under Krishna conscious, or that is not used in that way? That's a liberated soul. Okay. But he uses Krishna conscious, liberated soul. Okay. Even their bodies are not material anymore. Spiritual body, right? So they are not conditioned in any circumstance. Somebody who is fully Krishna conscious. Okay. All right. Thank you. Hare Krishna.